Gobind Singh College of Commerce, vibrant enable unit Jaagriti introduces Safar, a storytelling initiative that honors the spirit of perseverance. By sharing powerful experiences of individuals with disabilities and their advocates, Safar aims to reshape perspectives and spark conversation on accessibility and empowerment. We are delighted to introduce Iftkhar Ali, an inspiring entrepreneur, business leader, and advocate for inclusivity. Iftkhar was diagnosed with polio at the age of 1. Despite being discouraged from pursuing higher education, he cracked the CAT exam and pursued his MBA from IIM Calcutta, proving that disability is not a limitation but a mindset. He excelled in his professional career at HCL, TCS, and IMS India, and later established a self-sufficient digital solutions company, ALIQAN Technologies. ALIQAN Today, Technologies. sorry, ALIQAN Technologies. ALIQAN ALIQAN. Technologies. Yeah. Okay, ALIQAN Technologies. Today, ALIQAN Technologies boasts a prestigious clientele including HCL, Wipro, PwC, and the Shiv Nadar Foundation. Beside business, Iqtar advocates for the disability community and tirelessly works toward joining a more accommodating society. Join us as we dive into his remarkable story, exploring his experiences, challenges, and the lessons he has learned along the way. So, so, sir, uh, our, for, our first question for you is: you were diagnosed with polio at the young age and faced discouragement when choosing your career path. Was there a specific moment when you realized you won't let these challenges define your future? So can I ask you? So we can do this in English, or we can do this in Hindi plus English, because I'm sure if we do it in Hindi plus English, it is going to reach a wider audience. Of course, sir. It's your preference, whichever language you want to speak in. Okay. So polio जो मुझे हुआ था, it happened when I was 1 year old. So your question was, when did I realize that polio is not going to affect my way of life? ओके। तो जब Yes. 5 साल का, जब व्हेन आई वाज़ 1 ईयर ओल्ड, तभी पोलियो हो गया था मुझे। उसके बाद वे स्टार्ट, मतलब माय पेरेंट्स एक्चुअली दे नेवर होल्ड मी बैक कि तुम्हें, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 1980s। तो उस टाइम पे ये रहता था कि इफ अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विद समथिंग, मतलब वो स्पेशल स्कूल्स वगैरह रहते थे, तो कहते थे कि उसको मतलब यू शुड एडमिट द किड टू दैट स्पेशल स्कूल। But my parents thought otherwise. They think कि नहीं, if my kid wants to have education, we will have him go through a proper school, the normal school. So I got admitted in so I started my schooling in Delhi, then and moved to Agra. So basically I'm from Agra only. तो नॉर्मल स्कूल में जब पढ़ नॉर्मल स्कूल में जब मैंने स्टार्टिंग एंड जब वहाँ से एजुकेशन स्टार्ट करी, देन एंड वहाँ के जितने भी मेरे पीयर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, दे नेवर दे नेवर डिस्क्रिमिनेटेड विद मी ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। दैट्स व्हाई आई थॉट कि दैट ये जो भी मेरे अंदर थोड़ा सा भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, दैट वेंट अवे। कि जब ये लोग ही इतना नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं मेरे को, तो इफ आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ नॉर्मल पर्सन, देन बाकी भी नहीं सोचेंगे। दैट्स द thought process started, and then see कि हाँ, अभी you need to have something in your hand to prove things, and that was education। जो मुझे लगा कि if I do this right, then I should be able to do something with my life and just forget about my disability. Okay, sir. That was fabulous of your parents for choosing such a great school. Moving on to next question. Many doubted your ability to succeed in management studies, yet you cracked CAT and got into IIM Calcutta. What mindset helped you
push through the negativity and prove them wrong? ओके, तो आई विल टेक यू अ बिट बैक, थोड़ा-सा मैं आई एम कलकत्ता से एमबीए से पहले थोड़ी-सी जो मेरी जर्नी थी, सो आफ्टर 12th एक्चुअली आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। आई प्रिपेयर्ड फॉर सीपीएमटी, उस टाइम पे सीपीएमटी होता था, एंड आई क्रैक्ड द एग्जाम विद 15th रैंक सीपीएमटी की। बट ये हुआ था कि आई सीपीएमटी में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आफ्टर यू क्रैक द दिस थिंग, रिटन हो जाता, तो मेडिकल में जो भी पैनल था उन्होंने मेरे को क्लियरेंस नहीं दी। उन्होंने बोला कि इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम अ डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, वी कैन नॉट गिव यू एन क्लियरेंस फॉर एमबीबीएस डॉक्टर। सो वो फिर वहाँ पे ये था कि फिर वहाँ पे अगेन मेरे को थोड़ा-सा डिमोटिवेशन हुआ कि ये क्या हो रहा है? बट आई वांटेड टू परस्यू एमबीबीएस ओनली। सो आई थॉट द सो एमबीबी जो होम्योपैथिक था, आयुर्वेदिक था, वो मेरे दिमाग में नहीं था। तो आई लेफ्ट इट एंड आई थॉट कि देयर आई विल डू समथिंग एल्स विथ माय लाइफ। उसके बाद देन आई परस्यूड सम कंप्यूटर कोर्सेज, और कुछ कोचिंग्स वगैरह थी जो काफ़ी प्रेशर था मेरे पास लोगों से कि मतलब यू हैव दिस फिजिकल प्रॉब्लम एंड यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब इजीली, तो गवर्नमेंट में रिजर्वेशंस काफ़ी रहते हैं। बट एक्चुअली आई वांटेड टू परस्यू अ प्राइवेट जॉब बिकॉज जहाँ जो मेरी उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग थी ये था कि गवर्नमेंट जॉब पेज यू अ सर्टेन अमाउंट, दे डोंट गो बियॉन्ड दैट। बट इन प्राइवेट जॉब वो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर, you the raise, the your promotion, your growth happens on the basis of your ability. So that's why private job was more appealing to me at that point of time. But since there was no direction, उतना ज़्यादा career counseling वगैरह नहीं होता था, I'm talking about way back in 1990s and 2000s. So तब मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी जहाँ पे वो लोग एमबीए प्लस ये गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराते थे। तो जो वहाँ के जो टीचर थे वहाँ पे मैं वाज एक्सेलिंग इन ऑल द टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर एमबीए। तो देन से कि एमबीए मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने कहा एमबीए क्या होता है सर? तो तब उस टाइम मैट का एग्जाम होता था, तो उन्होंने बोला गिव मैट, मैं जो बोल रहा हूँ, और एक बार देखो एमबीए इज मैनेजमेंट स्टडीज, थोड़ा बहुत बताया उन्होंने मुझे, तो यू माइट गेट जॉब इन दिस थिंग। मैट मैट का एग्जाम दिया मैंने, आई थिंक आई स्कोर्ड 99 प्लस परसेंटाइल्स मैट। उसके बाद फिर आई वेंट टू अ कॉलेज फॉर एन इंटरव्यू। मेरे पास ऑलमोस्ट काफ़ी कॉलेजेस के इंटरव्यू कॉल्स आए थे मैट के। तो बट द कॉलेज एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम पे जो कॉलेज के जो पैनल बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बोल दिया था कि ड्यू टू योर डिसेबिलिटी हम लोग आपको एमबीए तो करा देंगे बट हम लोग आपको जॉब नहीं दिलवा पाएंगे। अगेन दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी। मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है कि जॉब दिलवा देंगे, मतलब पढ़ा देंगे, जॉब नहीं दिलवा पाएंगे। तो अगेन यहाँ पे तो जो मैंने सुना था कि एबिलिटी के ऊपर ये चीज़ होती है वो भी नहीं हो रही है। सो देन आई केम बैक एंड देन वन डे आई वाज सिटिंग इन द साइबर कैफे। वहाँ पे मुझे लगा कि एक बार आईएमएस इंडिया को आईएमएस देवर आईएमएस आईएमएस करियर लॉन्चर एंड टाइप कुछ कोचिंग सेंटर्स है ना। तो मैंने कहा एक बार मैं पूछता हूँ कि क्या मतलब इतना ये सब जॉब मिलती है नहीं मिलती है। तो आई जस्ट मतलब रैंडमली मैंने आई मेल्ड द सीईओ ऑफ आईएमएस इंडिया, कमलेश सदनानी। तो ही एक्चुअली कॉल्ड मी अप 2 दिन बाद। उन्होंने मेरे घर पे कॉल कर दिया कि उन्होंने बोला इफ्तिकार मैंने तेरी स्टोरी पढ़ी और तू तू एक काम कर, तू कैट की तैयारी कर। मैं कहा सर वो ये जो बोले जॉब वॉब नहीं दिलवा पाएंगे, वो कह रहे फॉरगेट अबाउट इट, वो मैं जॉब वॉब सब मिलेगी तेरे को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई एम सेंडिंग यू द मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टार्ट स्टडिंग। आगरा में बैठा हुआ है तू, मैं तेरे को वहाँ पे उस टाइम में आईएमएस का सेंटर नहीं था, तो मतलब मेरे ख्याल से उस टाइम के 1 साल बाद खुला था या उस टाइम पे था। तो मैं आईएमएस का कोर्स मटेरियल तेरे को भेज रहा हूँ, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू जो भी है, जो भी गाइडेंस चाहिए तेरे को, तू डायरेक्टली मेरे से बात कर। तो सर ने बोला मेरे को, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग एल्स कि मुझे वो गवर्नमेंट जॉब्स करना है, ये सब करना है, वो मैंने छोड़ दिया। पहले साल कैट दिया, पहले साल मैंने आईएम भरा था, कुछ और कॉलेजेस भरे थे। तो आई एम कैलकाटा एंड आई एम कोझिकोड, आई क्रैक्ड। जो रिटेन रिटेन कॉल्स आ गए थे मेरे पास, बट इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया मैं, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि मेरे पास जो ग्रेजुएशन थी वो बीएससी थी, बिकॉज आई वाज डूइंग बीएससी बिकॉज ऑफ माय डॉक्टर थिंग, एमबीबीएस के चक्कर में, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए। तो वो इंटरव्यू के टाइम पे ज़्यादा पैनलिस्ट को मतलब वो वाव नहीं कर पाया, तो वो नहीं हो पाया। देन एफिलिएट कॉलेजेस में आई फिल्ड अप सम कॉलेजेस जो थे, तो उसमें यूबीएस चंडीगढ़, इफ यू हर्ड ऑफ इट, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे आई टूक एडमिशन, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू निकल गया था, तो आई टूक एडमिशन। बट वहाँ पे भी जब मैं एमबीए कर रहा था, आफ्टर फर्स्ट ईयर आई रियलाइज, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एक्चुअली, कि जो यूबीएस जो पंजाब यूनिवर्सिटी की सेटिंग है पूरी, मतलब इट इज वन ऑफ द टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ इंडिया, टॉप 10 20 कॉलेजेस। और आई वांटेड कि मुझे मुझे एक और हायर प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे लोग मुझे सुन सकें।
मतलब यहाँ से भी मुझे लगता था कि थोड़ी गवर्नमेंट सेटिंग है इसके अंदर कॉलेज की, तो आई थिंक कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैंने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स छोड़ दिए और मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। वहाँ पे सब टीचर्स ने मुझे बोला, सब समझ गए थे कि ये कैट की तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इफ्तिकार व्हाट द हेल आर यू आर डूइंग एमबीए एंड यू आर लीविंग एग्जाम्स, एक साल बर्बाद कर रहा है, कैट में ऐसे करके नहीं होता, वैसे करके नहीं होता। मैं कहा नहीं यार, मुझे आई वांटेड टू डू दिस और मुझे करना ही है। तो देन आई टुक कैट। मैंने सिर्फ उसके बाद कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं भरे। मैंने कहा नहीं होगा तो फिर वी विल रिपीट यूपीएस चंडीगढ़ देखेंगे। एक कैट भरा तो आई आई रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम ऑल द 6 कॉलेजेस। I'm Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, सब जगह से कॉल आ गया था एंड आई क्रैक इंटरव्यू फॉर 5। अहमदाबाद के क्रैक नहीं हो पाया था, तो देन दैट्स हाउ आई गॉट इनटू आई एम कैलकाटा। तो आई चोज आई एम कैलकाटा एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। That was a great example of not letting rejection define you. So, इसके अंदर 2-3 इंसिडेंट्स से हुए थे जिनमें जो भी सुन रहे होंगे दे वुड बी इंटरेस्टेड। जनरली आई एम अ वेरी 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 पॉजिटिव पर्सन। मैं नेगेटिविटी को अपने आसपास रखता नहीं। मैं आई ऑलवेज ट्राई टू लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली। तो मेरे एक दोस्त था, मेरा फ्रेंड था, उसने जब मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था तो उसने मुझे पूछा था कि क्या कर रहा है तू? मैंने कहा एमबीए कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? तो कह रहा यार तेरे बस की बात नहीं है एमबीए, इंजीनियर इंजीनियर ज्यादा होता है। ही एक्चुअली सेड दिस ऑन माय फेस। तो वो देन ही गॉट मैंने जब क्रैक किया तो ही वाज द फर्स्ट वन टू अपलोड इट। देन देयर वाज वन टीचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशंस आई वेंट टू आईएमएस का जो हुआ था। तो वहां पे उस जो टीचर थे उन्होंने मुझे बोला कि इफ्तिकार यू वोंट बी एबल टू क्रैक आईएम, यू वोंट बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज, एमबीए इज नॉट योर कप ऑफ टी, you are more fit for government programs. And after certain years when I joined IMS, I actually I one teacher ne actually came to me for job because I remember you Iftikhar. I'm sorry I discouraged you at that point of time, but good that you cracked IM when did your MBA from IM. You proved me wrong. तो वैसे ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए हैं, but you know you just need to keep your thought process in the positive direction and then everything falls in place. definitely, sir, hard work speak louder than words. Yeah, so moving on to the next question. After completing your MBA, you worked at renowned firms like HCL, TCS, and IMS India. What were some key lessons you learned in the corporate world that helped you as an entrepreneur? So I started with HCL. HCL I worked for 1.5 years and then moved on to TCS. And then with IMS India, I was the center head for South India. Then after that, also, I think you might have missed it. I joined another IT firm as director of operations. So उसके अंदर I worked for around 2 to 3 years, and then I started my own company. So with TCS and HCL, the most important thing I learned was communication. How do you communicate within peers? How do you keep the corporate communication? किस तरह से people interact with the stakeholders, and how do you make things presentable? किस तरह से काम होता है? And then in the most important learning happened to me was in the last job, where I was director of operations, where it was a macro level view of everything whatever is happening अराउंड मी। मतलब जो भी कंपनी के अंदर मार्केटिंग वर्टिकल और तुम्हारा एचआर में कैसे फंक्शन कर रहा है, मार्केटिंग कैसे फंक्शन कर रही है, और द ऑपरेशन हाउ ऑपरेशन आर फंक्शनिंग। आई वाज द डायरेक्टर ऑफ एवरीथिंग। सो वहां पे काफी लर्निंग्स मिली। एंड उस टाइम से पहले ही आई आई एक्चुअली थॉट कि मेरे को बनना है, मुझे कुछ अपना करना है, बिकॉज ऑफ माय फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस। आई थॉट कि देयर शुड बी एन इकोसिस्टम जो विच इज कंप्लीट शुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मी, जो कि फाइनेंशियली जिससे कि फाइनेंशियल मेरे चलते रहे, और विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मी। तो दैट इकोसिस्टम कैन ओनली बी अ कंपनी, कि तुम एक कंपनी चला दो एंड वहां पे यू यू हैव पीपल एंड यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू, एंड फिर जहाँ पे तुम्हें बार बार मूव करने की जरूरत ना पड़े। So that's how the entire idea came into existence. Okay, sir. So, moving on to the next question. What inspired you to establish Alcoin Technologies and what Aliqan, was your Aliqan Alcon? Technologies. Sorry, ALIQAN, Aliqan Technologies. Alican. Okay. So, Yeah. what inspired you to establish Alican Technologies
And what was your vision when you first started? So, I answered the first part in the previous thing कि जो इंस्पिरेशन मिली थी जो स्टार्ट करने की कंपनी द मोटिवेशन बिहाइंड इज कि मुझे एक ऐसे इकोसिस्टम बनाना है विच इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट विच शुड बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मी जो कि डिपेंडेंसी मेरे ऊपर ना रहे मतलब इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल प्रेजेंस कि मेरे को ज़्यादा मूव करना ना पड़े और देन आई शुड बी एबल टू सस्टेन फाइनेंशियल एबिलिटी भी चाहिए होती है उसके अंदर और शुरू में द मोटिवेशन वाज कि तुम जब जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है आई थॉट कि जब अपनी कंपनी चालू करोगे इफ वी बिकम सक्सेसफुल व्हिच वी बिकेम इवेंचुअली तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई थॉट कि जॉब से ज्यादा बेटर मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में मिली लॉन्ग टर्म में जब इट्स बीन लाइक 10 इयर्स सिंस आई बीन लर्निंग एलिगेंट टेक्नोलॉजीज तो उसके अंदर ज्यादा नहीं व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन What was your vision when you first वो started? इनिशियली आई सो वी आई स्टार्ट विद सर्विसेज कंपनी तो इसके अंदर वी डोंट डू एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट राइट नाउ तो वी डू सर्विसेज you know so we are doing website development we are doing mobile app want to shift to my hometown agra as well and create a better तो वो इकोसिस्टम ही मेन मेरा फाइनेंशियल सिस्टम था Okay, so हम्म Alkine was bootstrapped from day one. यस How did you manage the initial challenges of funding and scaling the business? तो वो ऑर्गेनिक स्केलिंग हुई है अब तक तो इसीलिए मतलब जैसे स्केलिंग इस तरह से होती है वी आर नॉट गोइंग लाइक दिस वी आर गोइंग स्लोली अपवर्ड्स बिकॉज जो जो भी इनिशियल पैसे जो मैंने डाले थे तो दैट्स हाउ उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई है देन आई एम पुटिंग द प्रॉफिट्स बैक इनटू द कंपनी एंड दैट्स हाउ द सर्कल इज बीन गोइंग सिंस द लास्ट 10 इयर्स सो जितना पैसा आ रहा है वापस डाल रहा हूं मैं वी हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ लोन्स वी हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ फंडिंग द entire amount we completely bootstrapped and completely profitable. Okay, so okay, so moving on to next question. ALIQAN was bootstrapped from day one. How? Oh, sorry. So moving on to next question. You have spoken about changing perceptions around disability in workplace. What initiatives do you take to promote inclusivity in your business? So, so since the time I started and since the time I came into limelight, ki I'm doing this thing, Alican Technologies, and running this business, and I have this physical disability as well. So a lot of inquiries come to me. जो जो लोग फिजिकली प्रॉब्लम में होते हैं, वो लोग इंक्वायरी करते हैं कि सर गिव मी जॉब. सो मैं मेरा जनरल एडवाइस उनको ये रहता है, इनिशिएटिव आई कम टू लेटर. मतलब मेरा जनरल एडवाइस उनको ये रहता है कि इट यू नीड टू फोकस ऑन एजुकेशन. सो आई ऑल्सो जनरली मैं सोचता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं व्हेनेवर आई हैव डिस्कशंस उनको भी ये बोलता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस मोर ऑन द नॉलेज and the capability of an individual rather than rather than the physical facet because of course it also depends on the job description. So when we are having a sales when we are having a sales thing एक sales का जो profile रहेगा sales के profile में you cannot have someone like me who need to go around running. So वो वहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक होने की बात है. Otherwise, if you are educated enough, if your communications are good, so I think there are plenty of jobs around in the market and which where you can go and fetch jobs. There is so we have collaborated with one of the companies which are actually working for disability and we have also collaborated with one company जहाँ पर हम लोग उनको थोड़ा बहुत उनका ट्रेनिंग व्रेनिंग में उनको हेल्प करते हैं. We connect them with candidates who are physically disabled and they help them get the candidates please. The other one would be थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देते हैं उनको बेसिक लेवल पर and then they make them industry ready and help them to place. Okay, so that's great initiative. And the one thing you said about knowledge being the best thing to invest in. Education And and knowledge. yeah, sorry. Education and knowledge. Yeah, education and knowledge are always superior. If you have knowledge enough, you can overpower your physical disabilities. Definitely. So, moving on to the next question, it is
Many young professionals with disabilities struggle with confidence due to societal biases. What advice would you give them to stay motivated and focused on their goals? Societal bias as in, सर इट्स मीन कि आप you're ये talking about physically disabled individuals? yes, young physical disabled professionals who face societal biases like So actually many इस चीज की जो कंडीशनिंग होती है ना, आई आई एज आई टोल्ड यू इनिशियली, इस चीज की कंडीशनिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड ओनली. So that's where the role of parents comes in, the role of teachers come in, the role of mentors comes in. So everyone should treat the individual in a normal fashion. कुछ भी मतलब हर चीज नॉर्मली करो. वो ऐसा नहीं हो रहा कि वो जो यू आर लुकिंग एट द पर्सन डिफरेंटली, यू आर ट्रीटिंग हिम डिफरेंटली, यू आर सिंपैथाइजिंग विद हिम. तो जहां पर भी सिंपैथी शुरू हो जाती है ना, द अदर पर्सन स्टार्ट लूजिंग हिज कॉन्फिडेंस. एंड जो जो बंदा है जिसको प्रॉब्लम है, उसको क्या होता है कि ही शुड थिंक हिमसेल्फ. मतलब एक तो उसको नंबर वन, ही हैज टू बी पॉजिटिव. समथिंग विल हैपन. ये चीज वर्कआउट नहीं कर रही, दूसरी चीज वर्कआउट करेगी, दूसरी चीज वर्कआउट नहीं कर रही, तीसरी चीज वर्कआउट करेगी. सो तो कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करेगा ही उसके लिए. बट उसके लिए जो बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बोला, एजुकेशन चाहिए, या तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, या कोई भी कॉम्पिटेंस डेवलप कर लो. कोई भी एक कॉम्पिटेंस, मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन. कोई भी कॉम्पिटेंसी है, तुम यू आर गुड एट समथिंग डूइंग, मतलब कुछ अगर जैसे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट गेट एजुकेशन बट दे आर गुड इन सर्टेन, कोई भी उनका टैलेंट होता है कुछ, मतलब कोई भी घर के काम, मतलब गमले बनाना या कोई डब्बे बनाना, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी. तो दे शुड एक्सेल एट दैट, जो भी काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसी में आगे बढ़े. जैसे भी है, नॉट एवरीवन कैन गेट इनटू, नॉट एवरीवन कैन गेट एवरीथिंग. ये तो लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट. उसके में काफी लोग एजुकेशन से महरूम भी रह जाते हैं, और उनको एजुकेशन मिल नहीं पाती. तो उनको फिर एक तो सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिविटी, एंड देन यू हैव टू बी परसिवरेंट. ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फेलियर्स. मेरी जिंदगी में भी काफी फेलियर्स रहे. वन बट फॉर वन फेलियर शुड नॉट अफेक्ट यू कि टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. वो फेल हो गया, अच्छी बात है, यू लर्न फ्रॉम दैट फेलियर, यू थिंक कि हाँ, यहाँ पे ये चीज अच्छी कर सकता था मैं, यहाँ पे ये चीज बुरी कर सकता, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट. whenever you whenever you succeed, I'm sure it's going to be it's going to be a long term thing, which actually happened with me as well. And it happened for the best, because एक और चीज है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि whatever happens happens for a good. मैं डॉक्टर नहीं बना, आई एम सीईओ ऑफ अ कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है. तो आई थिंक दिस इज अ मोर कंफर्टेबल लाइफ फॉर मी. इफ आई हैड बिकम डॉक्टर, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए फिजिकली एक्सर्टिंग होता इस तरीके से. तो सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि अगर आपका एक करियर ऑप्शन वर्कआउट नहीं कर रहा, देन इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. और जो सोसाइटल बायस है, सोसाइटी के लिए तो यही है कि देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी सम कैरेक्टर्स जो कि आपको दे विल मेक यू फील इंफीरियर, दे विल ट्राई टू मेक यू फील कि हाँ, यू आर डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी. बट यू जस्ट नीड टू कीप योर आईज क्लोज टू देम, जस्ट इग्नोर देम, एंड then focus on people who are actually good to you, who are behaving normally with you, and just focus on yourself. Try to, inferiority complex should be out of the window. You should never have inferiority complex from anyone. Every individual is different, every individual is coming with different capabilities. yeah definitely the environment affects you most in Absolutely. your and having a one skill is best than putting your foot in different boats Having definitely good friends is so also moving essential to personal growth. yeah definitely. So the next question for you is, can you share a story of someone you mentored or helped through your work? Uh, मतलब लॉन्ग टर्म मेंटरिंग तो हुई नहीं है इस तरह से कि मैं आई बीन विद एसोसिएट विद द पर्सन. देयर आर पीपल हु कम टू मी फॉर एडवाइस, आई गिव देम एडवाइस, उनको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि इस तरह से कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ. देन एक दो बार बीच में वो फॉलोअप्स ले लेते हैं, एंड देन किसी का कहीं एडमिशन हो जाता है, किसी कोई कहीं करियर एडवाइस ले जाता है. सो स्टूडेंट्स हो गए, या और भी लोग हो गए जो करियर एडवाइसेस के लिए तो काफी ज्यादा लोग आते रहते हैं. इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे मेंटरशिप तो नहीं हुई है फुल टाइम, तो उतना टाइम नहीं मिलता करने का. Okay, that's not an issue. So moving on to the next question. Looking back, what has been the most rewarding moment of your career so far? Getting into IIMs.
getting into IIMs. That was a life changing moment for me, uh, because IIM में more than the education, it is the peers who जो exposure मिलता है, जिनके साथ आप पढ़ते हो, that is very very enriching. The networking that you get after coming out from the college, so that is also very very helpful. Well, it helps in your career growth as well. अभी भी Alican Technologies में, I get a lot of support from my alumni. उनके लिए काम करते हैं हम लोग, और so that is very important. So yeah, getting into IIMS was the career defining thing for me. Okay, so moving on to the next question. Would you like to share your upcoming projects you will be working on next? So right now, as I told you, we are a completely a services company. हम लोग अभी we are doing website development, mobile application development, product developments. Where we are doing customized product development. So the requirement comes into the customer, and then we developing, and then we pass it back to them. We have also moved into staff augmentation and permanent hiring space as well. So I have actually right now I'm sitting in Agra office. So I've actually so we have taken a bigger office now. So right now I'm taking the first office, and then on the next one we are moving to a bigger office, and we are actually going to have more than 40 odd recruiters team from working from Agra only on these projects. So that's it. And I'm going to do something in education sector as well, and I'm working on few products which in due course of time it will come out. Okay, so that's great to know about your future projects. Next question for you is, if you could go back and give your younger self one piece of advice, what would it be? No, my younger self was good. पूरी मेहनत करी है. It was fine. Yeah. तो उसमें कमी रही नहीं है इसके अंदर भी, तो मैं वही मेहनत करूँगा दोबारा से, अगर मैं वापस कर उसको भी एडवाइस करूँ, जो मेहनत जिस तरह से करी है, उसी तरीके से मेहनत करें। That was a great answer. So, moving on to the last question. What message would you like to leave for aspiring entrepreneurs and individuals facing similar challenges? See, number one, I already told you, you always have to be positive. Number one thing. Before you start anything, मतलब नेगेटिविटी के साथ तो कोई चीज स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो. And then you have to be perseverant, you have to work hard, slog in. मतलब अच्छा खासी मेहनत करनी पड़ती है when you start a company. और the most important thing is networking. So networking, you need to stay connected with a lot of good individuals from the industry, because networking helps you, it gives you exposure, it gives you कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, और sometimes it gives you work as well, it gets you work as well. So networking is one thing, and then of course once you get into entrepreneurship, then your the entire governance structure, किस तरह से आप कंपनी चला रहे हो, then your capability matters कि तुम किस तरह से are you capable enough to become an entrepreneur, because you have to actually identify whether you have it in you to become an entrepreneur or not, because not everyone can become entrepreneur. If some people are really good at job, तो वो जॉब करते हैं, जिनको लगता है कि वो entrepreneurship, मेरे को लगा था कि मेरी नेटवर्किंग अच्छी है, आई थिंक आई कैन मैनेज पीपल, आई थिंक आई कैन मैनेज अ यूनिट एज वेल इन अ बेटर मैनर, तो आई कैन डू एंटरप्रेन्योरशिप, और वो इट प्रूव टू बी राइट एज वेल, जब क्योंकि अभी 10 साल तो हो गए चलते हुए, तो आई एम लुकिंग एट अनदर 10 इयर्स कि अच्छे से चलेंगे। तो आप लोगों की दुआएं रही लो, तो दैट्स हाउ यू थिंक। और वही चीज सोचनी पड़ती है जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, कि उनको फंडिंग नहीं मिली तो किस तरह से तुम्हें बूटस्ट्रैप होकर चलाना है, स्केल अप करने का जो मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप स्केल अप कर दो एकदम से, यहाँ से वहां पहुंच जाओ। बट मुझे आई डिड नॉट वांटेड टू गेट इनटू दैट फंडिंग थिंग, क्योंकि उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, एंड देन मैं उतना ज्यादा, फिर मेरी इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो जाती, और ये कंपनी स्टार्ट कर दी तो फर्स्ट थिंग वाज कि मेरे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना था। तो दैट वाज अगेन वन ऑफ द रीजंस। और फिर देन वी आर बूटस्ट्रैप, वी आर प्रॉफिटेबल, तो प्रॉफिटेबल जा रहे हैं तो उसके अंदर जरूरी थोड़ी कितनी जल्दी इतनी तेजी से राइज करना है फंडिंग से। वी आर राइजिंग ऑर्गेनिकली एंड वी आर गोइंग अपवर्ड ओनली। Okay. So, with this, we conclude the episode of our podcast, Safar 4.0.
Mr. Iftkhar. We are very grateful to have you with us. Thank you for your precious Thank you time. for having me. Thank you for your time. We appreciate each one of you for being such an attentive and patient audience throughout the podcast.